Good morning, sir. Lecture number 2, chapter 20, right? Of SS, natural disasters and their management. Now, say children, not going too much in detail. In lecture number 1, we have studied about different natural disasters, that is drought, tsunami, flood and earthquake. Sorry, we have not studied about drought, but we have studied flood, cyclone. Right? Flood, cyclone, tsunami and earthquake. These were the 4 natural disasters which we have studied. And we have come to conclusion what to do and what not to do. This was the thing, right, children? Now, we will study about new topics, that is called drought and other topics, right? You come to page number 150. Page number 150. Let us see what is meant by drought. Dushkal, sukha. Because see, this is supposed to be studied now. Why? Because we are an agriculturist country. India is totally dependent on rainfall. And as you have studied from primary standard, from 5th or 6th standard, okay, monsoon is the prime season. If monsoon fails, then we are supposed to pass through phase of drought, scarcity of water. Not only scarcity of water, it affects each and every dimension, right from agriculture to economy to domestic uses. You know, what is the value of water? Over rainfall is welcome. Little bit of, you can say, problems are there, but that problems can be solved. Suppose there is flooding. Okay, it occurs for 2 or 3 or 5 days, tentative. You have to face the difficulties for 2 or 5 days or possibly 1 week. But for a whole year you see, when the dams are filled, when the rivers are brimming, even in winter and summer, it will add joy. It will add joy to agriculture. It will add joy to industrial activity. But if there is drought, what not happens, you just imagine. Understood? Okay, so let us leave out droughts. A drought is a highly destructive hazard, leaving a long-lasting impact. Dushkal, sukha. Right? It is connected with water and food, which is very much needed for the existence of living organisms. Understood? The problem of drought occurs in region of monsoon climate where the rainfall is irregular and very scanty. जब कम बारिश होती है तब ड्राउट का असर ज़्यादा मिलता है. सबसे ज़्यादा उसको एग्रीकल्चर में दिखाई देता है. अगर बारिश नहीं होगी एग्रीकल्चर नहीं होगा. अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, अटक जाएगी. ऐसा समझो. This is so because of agricultural crops, food grains, and living organisms depend completely on water. Right? They completely depend on water. And we are monsoon country. Monsoon is a prime season. And if monsoon fails in India, क्या होगा? Because India is having a massive population of 138 crores. How to feed? That is a major problem. Understood? The shortage is created due to water crisis. Under such situation, heavy damage is done to agriculture and natural vegetation. सूखे के सब जगह दिखाई देती है. Earlier, many people died due to starvation during the drought. But now it has been reduced due to transportation and well-planned management. अभी सूखे की असर कम दिखाई देती है क्योंकि एक स्टेट में अगर कम बारिश है तो दूसरे स्टेट में बैलेंस बारिश है, ज़्यादा बारिश है. उधर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है
तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के ज़माने में सूखे की असर ज़्यादा दिखाई नहीं देती, काम वक्त चला जाता है समझ में। लेकिन सूखा तो सूखा ही होता है। क्लियर? नाउ व्हाट टू डू? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर शुड बी इंटेंसिफाइड, मतलब पानी की बचत होती है। यू नो व्हाट इज मीन बाय ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? गुजराती में उसको बोलते हैं टपक सिंचाई पद्धति। बहुत कामयाब है और एक एक बूंद पानी बचता है, पानी का बिगाड़ नहीं होता। समझो। नंबर 2, फूड राशनिंग and use of water should be planned after estimating their availability, because we are rationing, or if there is less rainfall, we are directly saving on water supply in our areas, right? Municipality goes for 2 or 3 days water cut, in some areas even 8 days water cut, and if the remote area is intensified drought region, some water tankers are to be made running there, right? I remember last year in South India there was not adequate rainfall. Whole North India, East India, West India got bountiful rainfall, but in South India rainfall was little less. Last year I have seen Madras is a huge city, cosmopolitan city. Madras was facing severe drought problem of water. So the administration had to run regular trains carrying water to Madras. Regular trains of water was to be carried out. क्या करें? क्योंकि मद्रास की पॉपुलेशन तकरीबन 1.7 करोड़ है, 70 to 18 मिलियंस, इंडस्ट्रीज है और कई सारी चीजें हैं, सबको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, भले कम लेकिन कम पानी तो देना पड़ेगा थोड़ा सा। Was great, right? इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, बाढ़ आती है ना, वो सहन होता है, 2-3 दिन की बात होती है, 5 दिन की बात आती है, लेकिन बाढ़ की वजह से ज़्यादा पानी मिलता है, डैम्स में स्टोरेज होता है, नदी में स्टोरेज होता है, ताकि ऑफ सीजन में ये कोई दिक्कत ना हो। बाढ़ के मुश्किल हालत में 2-5 दिन 15 दिन तकलीफें झेलनी पड़ती है, लेकिन वो 15 दिन की तकलीफ के बाद अगर हमको 365 डेज का बोनस मिलता है तो वो तो सही है, बढ़िया है। If we are supposed to sacrifice 15 days and getting the benefit of 365 days, I don't think we are at a loss. Understood? So this is the food rationing and use of water should be planned after estimating their availability. Arrangements should have been made for fair price distribution of food grains and relief work, जिसको हम राहत कार्य बोलते हैं, क्योंकि सूखा पड़ता है, सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कीमत आसमान छूने लगती है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, गरीब लोगों को क्या करें? तो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली प्लान्स all these activities. When there is heavy rainfall, when there is, you can say 100% year, the government stores grain from open market, right? खेडूत के पास से वो लोग खरीद लेते हैं, और बाढ़ जो दुष्काल का समय होता है उस वक्त वो लोग रिलीज करते हैं, ताकि प्राइस मेंटेन रहे और लोगों को 2 वक्त पर्याप्त खाना मिले, प्राइसेस आर कंट्रोल्ड। Right? Construction activity should be stopped except the inevitable work, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत पानी की जरूरत होती है। And almost local authorities, municipal corporations, when there is a failure of a year on monsoon, literally they stop construction activity because there is no water for regular use. Then how can you give water for construction activity? And construction is such an activity which requires ample amount of water. You see, big constructions require that water.
Understood? What not to do? To prevent the food wastage, do not hold large scale dinner parties. अन्न का बगाड़ नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। Citizens should not hoard food grains or fodder. संग्रहखोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संग्रहखोरी से भाव बढ़ते हैं और व्यापारी लोग यही चाहते हैं कि लोग संग्रहखोरी करें, बाजार में अफवाहें फैलाते हैं, इसीलिए लोग संग्रहखोरी पे उतर आते हैं और भाव बढ़ा देते हैं, राइट? Forest fire. A forest fire is a fire which occurs in forest and creates devastation. You know, last year Australia में forest fire हुआ था, right? Except for lightning, all other reasons of the forest fire are man-induced. अगर बिजली गिरने से आग लगी है तो वो नेचुरल है, वरना फॉरेस्ट फायर आदमी की गलती से, इंसान की गलती से ही होते हैं, खास करके सूखे मौसम में. We should be precautious. Among them, throwing of burned butts of cigarettes, सिगरेट जला ली, खत्म कर ली, फिर उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है बट वो ऐसे बुझा भी ना भी तीली फेंकती, आग पकड़ ली और वो आग धीरे धीरे कितनी बड़ी हो जाती है, कितना नुकसान होता है, इमेजिन हम नहीं कर सकते, राइट? Butts of cigarette, biddies or matchsticks, burning things left by tourists. टूरिस्ट लोगों की भी गलती होती है, कई बार लापरवाही होती है, गलती में लापरवाही. Pilgrims or shepherds are the major reasons, right? There are more probabilities of the forest fire occurring during dry seasons or after autumn. खास करके समर सीजन में फॉरेस्ट फायर की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ड्राई सीजन होता है, सब कुछ सूखा होता है और सूखी चीज़ें जल्दी आग पकड़ लेती है, आपको मालूम है, right? At that time, the dry grass and the shredded leaves act as a fuel. घास भी सूखी होती है, पत्ते भी सूखे होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं और जल्दी आग को बढ़ावा देते हैं, फैलावा देते हैं. This situation is responsible for spread of forest fire, right? When both the winds are inflammable, fuel and dry, then they form the basis of forest fire, which spreads faster during windy days for more temperature and less humidity. एक साइड से पानी हवा का बहाव होता है, एक साइड से आग लगी है, जैसे जैसे हवा चलती है, हवा का बहाव जितना तेज होता है उतनी आग जल्दी से फैल चुकी होती है. हमारे नेशनल ज्योग्राफी चैनल में कई बार बताते हैं, आपने देखा होगा, राइट? Some tree ooze out oily and inflammable material. They release oily material, and this oil adds fuel to the fire. When you add oil to the fire, it will burst out. ज़्यादा आग पकड़ेगा. So the fire spread faster. Once the forest fire starts, it spreads in direction of the wind, advancing at the velocity of about 10-15 kilometers per hour on all the sides. एक घंटे में 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से वो आगे बढ़ते हैं. उसको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है जब आग बड़ी हो जाती है तब. Once it starts, and if attempts are made not to promptly do the use, the forest fire would not stop until under two situations. Number one, the forest fire is extinguished completely by itself. अगर आग बढ़ गई तो भैया बात खत्म हुई. अगर अपने आप आग काबू में आ जाती है, बढ़ावा रोक देती है, तो चमत्कार होता है कुदरत का. और ड्यू टू हैवी रेन, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया की आग खूब बढ़ गई थी, खूब बढ़ गई, 6 महीने तक आग लगी. लेकिन वन साइक्लोन और was on northern part of Australia, northern coast of Australia, which advanced from the mainland, and because of this heavy rain, this forest fire extinguished. It acts as a spray. आपको मालूम है
जब बारिश होती है तब सब लोग सब भीगा हो जाता है फायर एक्सटिंग्विशर पे, वरना हमारी कैपेसिटी नहीं है हम उसको आग को बुझा सकें। ऐसा समझो। Due to forest fire, smoke and spark rising high with the warm air current create a risk of fire among near settlements. कई झुग्गियां होती है, झोपड़पट्टी होती है, कई इलाके होते हैं, वो भी आग की झपेट में आ जाते हैं। Right? What to do? Act according to the instruction of the forest department. सूचना का पालन कीजिए। Right? Number 2. Arrange special patrolling in forest during dry seasons. ताकि टूरिस्ट गलती से भी कोई गलती ना करे। Employees of the forest department should be trained for extinguishing forest fire. पूरा ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेस्ट में जो काम करते हैं उसको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। Now what not to do? While traveling through the forest, do not throw burning bidi or other lighted things. इर्द गिर्द किसी भी जलती हुई चीज, खास करके ड्राई सीजन में, हमें कभी फेंकनी नहीं चाहिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। People traveling in the settlements near the forest area should not ignore the instruction from the forest department. पूरा इंस्ट्रक्शन का पालन होना चाहिए। You understand? Man-induced disasters, हम जो बता रहे हैं उसमें पहला है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में डिजास्टर लगते हैं। In industrial townships, mills, factories, etc., there is a chance of accident even though enough precautions are taken. कई बार ऐसा होता है, मामूली गलती भी, प्रिकॉशन के सारे साधन साथ मजबूत है, अवेलेबल है, फिर भी कुदरत है, हो जाता है कभी। such accidents result into death of people. हम अखबार में पढ़ते हैं कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। Livestock, कहते हैं cattle, and damage the property. Besides, the environment is also badly affected. कई बार poisonous गैसेस भी रिलीज होती है, उसमें बड़ा जान माल का नुकसान होता है, क्या करें? Environment is also badly affected. Human errors are the base of industrial accidents. ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हमारी भूल की तहत होते हैं, मतलब हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। Men undertake the management and care of various machines of industrial process and collections, transfer and distribution of the manufactured goods. At every stage, an accident cannot be ruled out. मतलब क्या हुआ कि जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो इंडस्ट्री में कई तरह के काम होते हैं। Number of activities is done by industry. And every step, some or the other dangers are included in it, risk is included in it. You cannot avoid it. There are precautionary measures. But still, when full-fledged working is going on, due to negligence of human being, due to human error, something happens which results in great loss. जो मैंने इंट्रोडक्शन के पहले लेक्चर में बोला था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का आप देखो, पूरा आप देखो तो ये ह्यूमन एरर थी, एक इंजीनियर की भूल थी। चौनीबॉल में भी जो घटना हुई वो भी ह्यूमन एरर ही थी, राइट? टेक्नीशियन नहीं, वो मेरे को थोड़ा मालूम है। शिफ्ट जब चेंज होती है तो जो यूरेनियम का जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन जो होता है ना, वो कंट्रोल करना पड़ता है। शिफ्ट चेंज हुई है, वो एपिसोड मैंने पूरा देखा है। शिफ्ट चेंज होने वाली थी और वो
मीटर पे बताते हैं फिजन खूब लेवल से आगे हो चुका था, लेकिन वो जो टेक्नीशियन जो ऑपरेट करने वाला था उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये तो रोज होता है, अपने आप काबू में आ जाएंगे, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। और वो अपनी शिफ्ट चेंज होते हुए दूसरी शिफ्ट में जो आते हैं उसके जगह जो टेक्नीशियन आते हैं उसको बताए बिना वो चला गया। दूसरा टेक्नीशियन आ गया, अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी नज़र वो रिएक्शन पे नहीं थी। रिएक्शन हद से आगे बढ़ गया और ब्लास्ट हुआ। फिर पूरा इतिहास लोग जानते हैं। तो ये मामूली गलती थी, एक टेक्नीशियन थी जिसने पूरी दुनिया को हिरोशिमा नागासाकी की याद दिलवा दी थी। है समझ में? भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं। यूनियन कार्बाइड, मैंने बोला था ना फर्स्ट लेक्चर में, located at Bhopal, which is the capital city of Madhya Pradesh, used to produce pesticides, means insecticides, Jantunashak dawa. In the process of production of poisonous gas, mica was used. It's a poisonous substance. The gas was stored in large tanks. In the early morning of 3rd December 1984, the poisonous night gas started leaking and the gas spread very quickly, from the tanks, which lasted for 40 minutes. वो गैस दूर दूर टैंक में स्टोर किए जाते हैं। टैंक का स्टोरेज बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, पाइप्स इतनी मेंटेन नहीं थी, पुरानी वाली पाइप्स थी, तो प्रेशर बढ़ने से जैसे लाइन फटती है ऐसे पाइप में जो जॉइंट्स होते हैं वो फट गए, मतलब लूज हो गई, और लाइन के जरिए ये गैस बाहर आने लगी, अंदर का प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ इसलिए, राइट? Yes, for 40 minutes. Due to this event, which took place in early morning, the gas spread very quickly over the densely populated area in Bhopal. Right? According to official figure, about 2,500 people died and thousands of residents in Bhopal were affected due to this poisonous gas. और सरकारी आंकड़े कभी सही नहीं होते भैया। Unofficially आप देखो, more than 14,000 people lost their lives. 14,000, वो कम बात नहीं थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसका कंपेंसेशन का केस चल रहा है, छोटी मोटी घटनाएं के बारे में, लेकिन आज भी उसको उन लोग को न्याय नहीं मिला। और उसका जो चीफ था एंडरसन, ऐसा ही नाम था, उसको सरकार, उस वक्त जो सरकार थी मध्य प्रदेश की, उसको भोपाल से दिल्ली का सेफ पैसेज मिला और दिल्ली से वो अमेरिका चला गया। एंडरसन या ऐसा कुछ नाम था, मेरे को मालूम है, पढ़ा है मैंने, क्योंकि यूनियन कार्बाइड अमेरिकन कंपनी थी और उस वक्त अमेरिका से सब डरते थे, हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी, इधर इतने लोग मरे इसकी कोई कीमत नहीं थी। सरकार को ये फिक्र थी कि अमेरिका से हमारा रिश्ता ना बिगड़े, अमेरिका हम पे नाराज ना हो। उस वक्त अमेरिका सब पे दादागिरी करता था, अपनी भूल छुपाने के लिए भूल पे भूल करना चाहता था। तो इसीलिए उसको भगा दिया। आज तक वो हिंदुस्तान नहीं है, और आज तक दिस इंसिडेंट occurred before almost 36 years, still people are paying for it. जो उसमें से बच गए थे आज भी कई बीमारियों के शिकार हैं, कई लोग जिंदा हैं, है समझ में? Yes. Besides, people were also killed. Thousands of birds and animals, drinking water, resilient land, unborn babies, newborn babies, pregnant women were the victims of this adverse effect. Right? While 10,000 people became handicapped permanently, and 1.5 lakh people were handicapped partially.
ये सब सरकारी आंकड़े हैं जो सही नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा किया था? व्हाट टू डू? इंस्टॉल मॉडर्न वार्निंग सिस्टम टू गेट एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट गैस लीकेज। अभी तो टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, predetermine the high level measures for safety in factories and support it. Understood? Third, if the gas leaks during its transfer, the gas tanker should be driven away from human settlements. क्योंकि जो कुकिंग गैस ट्रांसपोर्ट है, टैंकर्स में भी कई बार ऐसा हादसा होता है और ड्राइवर भाई अपनी जान की बाजी लगा के ह्यूमन सेटलमेंट से टैंकर्स दूर ले जाते हैं अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना। राइट? ऑब्जर्व द विंड डायरेक्शन एंड रन इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि गैस का बहाव कम हो। विंड की दिशा में गैस चली जाती है, हमको ज्यादा नुकसान नहीं होता। डू नॉट ट्रीट ब्रीथलेसनेस, बर्निंग आइज बाय योरसेल्फ, सीक मेडिकल गाइडेंस। और उसमें सबसे ज्यादा अहम बात ठंडा पानी की है। ठंडा पानी आप एंड वाटर हैज दैट कैपेसिटी टू डाइल्यूट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। गैस डिसॉल्व हो जाएगी पानी में, राइट? फिर डॉक्टर के पास जाना, दैट इज अ हैंडीवर्क, राइट? Fainted or weak people should be immediately shifted from the affected area. Understood? Inform fire brigade and police. जल्दी से उसका ध्यान देना चाहिए। What not to do? During rescue operation, persons are not associated with the work should not gather around. मतलब रेस्क्यू ऑपरेटर्स को अपना काम करने देना चाहिए। Do not enter the affected area till the area under gas leakage is totally declared safe by the authorities. Do not dare to go over there because it may cause another accident. Right? Do not join the rescue operation without proper training and necessary equipments. वरना हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। हम रेस्क्यू करने जाते हैं, कोई हमको रेस्क्यू करने आ जाता है। नाउ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का तो मैं समझा सकता ही नहीं, क्योंकि अभी आप सब कोरोना में फंसे हो, मैं भी फंसा हूँ, इसीलिए तो वीडियो लेक्चर की बातें हो रही है। 1 साल से वीडियो लेक्चर पे पढ़ते हैं ना, तो बेटा ये तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ तो भी आपको मेरे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। है समझ में? ओके। वायरल डिजीजेस, राइट? जिसको गुजराती में चेपी रोग बोलते हैं, ये कोरोना हुआ ना। When the large number of people over the wider area become victim of any disease, it is called epidemic. और जब ये डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं। आज कोरोना को हम एपिडेमिक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। है समझ में? People lose their lives due to these diseases. There is a faster increase in the number of patients of viral diseases than general disease. जल्दी लोग झपट में आ जाते हैं क्योंकि इसके वायरस दिखाई नहीं देते, ट्रांसमिट हो जाते हैं फटाफट। Today, thousands of people have become the victim of dengue, Ebola, ये सब वायरस डिसीज है, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, etc. These diseases are very much dangerous. In earlier times, lakhs of people died due to plague. However, such deadly diseases are controlled with the help of scientific invention. Medical science जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कई ये सारी डिजीज की बीमारियों का हल भी निकलता है, वैक्सीन भी आती है और कुदरत और हमारे में लड़ाई होती है। हम नई नई दवाई ढूंढते हैं, कुदरत नई नई डिजीज की भेंट देता है, कई प्रकार के वायरस आ जाते हैं, मालूम नहीं कैसे कैसे। ये कोरोना का तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। समझ में? Along with it, the new viral disease and those diseases which cannot be cured by traditional medicines. There
there is always a danger of widespread death of mankind. कई सारे मौत होती है। आपने देखा ना लॉकडाउन के फेज में, अप्रैल में जून में कितने लोग मरते थे। इटली में देखो, स्पेन में देखो, फ्रांस में देखो, कितने। हमारे भारत क्या हाल देखो, वो 3 महीने हमने कभी नहीं भूलने वाले निकाले हैं। कैसी हालत थी हमारी, राइट। During the plague epidemic in Surat in September 94 and recently swine flu and dengue epidemics, many agencies took a precaution steps to prevent death, right? Remedies against viral diseases. An important step for the sake of viral disease is to be vigilant from infection. People should be educated with results and safety and disease for propaganda and transmission. लोगों को आगाह करना पड़ेगा। Take anti-disease vaccine अगर मिलती है तो। Arrange for special separate ward for patients treatment, right? ये कोरोना में सब, मैं डीप में नहीं जाता हूँ क्योंकि सबको मालूम है क्या करना है, हम सब जाएंगे। अभी फर्स्ट वाले बच्चे को भी मालूम है कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है, होम आइसोलेशन and all these things, right? Take steps as per the guidelines and instruction issued by WHO, right? ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आता है terrorist attack. As we know, since last decade in the last century, the terrorist activity in the entire world has become very much wicked. एक प्रोफेशन बन गया, बिजनेस बन गया, क्या करें? पूरी दुनिया में ये होता है। दुनिया के सारे देश इसकी चपेट में हैं। In reality, terrorism does not care for any race, क्योंकि उसकी कोई नाक जात नहीं होती है, कम्युनिटी और रिलीजन। आतंकवादी होता है। It is the enemy of mankind. The immoral destruction acts performed by the person or a group is called terrorism. ये आप underline करो, what is meant by terrorism? Inhuman acts like destruction of property, creating an atmosphere of fear and thereby drawing attention towards demand. खौफ पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं, फिर अपनी मांगे बनवाते हैं, लोगों को मजबूर कर देते, सरकार को मजबूर कर देते हैं, राइट? Genocide means mass killing, सामूहिक हत्या, कई लोगों को एक साथ मार देना, बॉम्ब ब्लास्ट वो सब होता है। Abduction, kidnapping and all these things are terrorist weapons. ये सब सारी चीजें terrorism में यूज होती है। Nowadays, terrorism is spread in many countries of the world. Let us study out some terrorist incident. On 9th September 2001, a series of suicidal attacks were made in USA by the terrorist organization Al-Qaeda, Bin Laden wala. About 19 terrorists hijacked 4 passenger jet planes, of which 2 planes were dashed against Twin Towers in New York City. और कैसे Twin Tower ठहर गया? Basically 3 प्लेन उसे गिरता, टावर 1 में 2 और टावर 2 में 1। उसके कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, देख लेना। Due to this, all the passengers on board and many people working in these towers were killed within few minutes. World War II के बाद ये सबसे बड़ा अमेरिका में हमला था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका पे सबसे बड़ा हमला जापान ने किया था, पर्ल हार्बर। वो तो लेकिन अमेरिका से कई किलोमीटर दूर था, thousands of kilometers, and that was a time of World War. It was army to army. लेकिन ये तो टेररिस्ट अटैक था अमेरिका की धरती पे, अमेरिका की जमीन पे। और जो ट्विन टावर्स थे, they were financial hub of world, not only न्यूयॉर्क। अमेरिका का वो नाक था, उसकी शान था, और वो दोनों गिरा दिए बिन लादेन ने। ऐसे समझ में। फिर अफगानिस्तान की क्या हालत हुई सबको मालूम है। Many people were injured in these 2 houses and collapsed.
planes, one dashed with the Pentagon and other dashed in form in Venezuela. एक पेंटागन में घुस गया था और एक वेनेजुएला की खुली जमीन में ब्लास्ट होके गिरा था। सब प्लेन्स के पैसेंजर मर गए थे। There was no survivor from the two planes there. In this attack, about 3,000 people, not 3,000, more than 4,500 people, 4,500 से ज़्यादा लोग मरे थे। In this attack, more than 4,500 people were killed and more than 6,000 injured. Right? On 13 December 2001, 5 terrorists from one terrorist organization attacked Indian Parliament building and took the complex under the bomb by firing without any restraint. उस पर एक वेब सीरीज भी बनी है। हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। Indian army soldiers staked their lives and defined the plan of the nation's enemy to dissolve the parliament. वो लोग पार्लियामेंट का बिल्डिंग उड़ा देना चाहते थे, लेकिन उसका क्योंकि 5 आतंकवादी को मार गिराया था इंडियन आर्मी ने। राइट? विच इज द होली टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे पार्लियामेंट का बिल्डिंग बच गया था। तब से पार्लियामेंट की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। About 8 security guards became martyred and 16 injured. क्रॉस फायरिंग में जो 5 आतंकवादी को मार गिराया, उसमें हमारे 8 आर्मी के जवान शहीद हुए थे, लेकिन पार्लियामेंट को उसने बचा लिया था। On the night 26 November 2008, a series of bomb blasts and firing took place near the well-known hotels in some parts of Mumbai at a regular interval. मुंबई में हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 26/11 जिसे बोलते हैं। About 137 people were injured and number of them killed in some known hotels. The terrorists kept many people under custody. वो कसाब वाला इंसिडेंट। And 26/11 मूवी भी आपने शायद देखी होगी। 10 आतंकवादी घुस गए थे पानी के रास्ते, मुंबई आ गए थे। The central government sent 200 NSG, National Security Guards, commandos, 50 military commandos and 5 battalions to control the situation. सबको मार गिराया था। एक जिंदा पकड़ा था, वो मुझे पता है, वो स्क्वाड आकार में भागना चाहता है, लेकिन कसाब एक मुंबई पुलिस के जो हवलदार थे, नाम तो मैं भूल गया, वो सिर्फ लाठी से कसाब पे कूद पड़े थे। कसाब के पास तो ऑटोमेटिक राइफल थी AK-47। वो हवलदार को भून दिया, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए उसने इस कसाब को नहीं छोड़ा था और कसाब जिंदा पकड़ा गया। शायद 26/11 मूवी आपने देखी होगी, वो सीन देखना। आज भी मुंबई में उसका स्टैचू बनाया गया है। He became शहीद, मार्टर। वरना ये 2 लोग जिंदा होते तो कई और लोगों को मारते। ईरानियन कैफे पे हमला हुआ था, CST पे हमला हुआ था, हॉस्पिटल में हमला हुआ था, सब बताते हैं। On December 14, 141 people, including 132 innocent people, were killed in the terrorist army school located in cantonment area of Pakistan. वो तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाते हैं। जब उसके वहाँ ये आता है तब मालूम पड़ता है टेररिज्म क्या होता है। Right? What to do? Inform the police about the doubtful behavior of a people. Right? अगर आपको कोई ऐसा दहशत वाला मालूम पड़े तो आप पुलिस को ध्यान दो। Do not touch any unclaimed things in public places, such as shopping malls, cinemas, gardens, religious places, etc.
सिक्योरिटी चेक फॉर सेफ्टी रीजंस, वो तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा क्योंकि आतंकवादी हमारे बीच में ही होते हैं. If you rent your house, register to the nearest police station. This is required for legal provisions. Right? ये सब करना पड़ता है. Public places should be well equipped with CCTV cameras. Right? While traveling in a bus or train, if any person is noticed having a baggage left, inform the responsible authorities immediately. आसपास ध्यान रखना मांगता है. अगर आपको किसी में शक है, कोई चीज छोड़ के उतर जाता है, तो अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करो. ये सब पिक्चर में उसको बताते हैं. If a neighbor, sorry, if your neighbor is single, does not mingle with local people in working or computer till late night, then inform the police about his or her behavior. अगर आपके आसपास में भी किसी पे संदेह होता है तो पुलिस में जान करो. शायद हमारे बीच में भी कोई हो सके. Right? Inform the police about unclaimed vehicles. ये सारी जानकारी को मालूम है. What not to do? Do not accept any goods or parcels from unknown people. Do not rent a house to unknown person without proper authority or inquiry. Do not sell your home, mobile phones or vehicles to unknown people. और कई सारी चीजें जो होती है वो हमको ध्यान रखनी पड़ती है ताकि हम ऐसी चीजों में से बच सके. राइट? वैसे तो हमको सबको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन if we are precarious, if we are attentive, then we can save ourselves from all these nasty activities. Okay, children? So, now it's your time for your homework. Let us take your homework. Question number 1. Write a short note on on viral disease. Right? Viral diseases. ये आपको थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप अपने आप का भी लिख सकते हैं. What should be done to avoid terrorist attack? What should be done to avoid terrorist attack? इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मालूम है, बराबर है, तो भी आप लिख सकते हैं. है समझ में? So that is a thing. Okay, children? So see you. Till then, goodbye.